Welcome learners. Today we are going to discuss Unit 19 of Module 9, that is the role of school heads in institutional planning, and under that unit we are going to discuss first the steps of effective institutional planning. See, in the first part of the unit, that is in Unit 18, we have discussed what is institutional planning, that means the meaning of institutional planning, the objectives of institutional planning, the characteristics of institutional planning, and the scope of institutional planning. So we have discussed what actually the institutional planning includes. But here in this unit, as a school administrator, as a school teacher, because you all are school teacher, you all are taking these courses and you are from the part of education, so if you are not a teacher, you are going to be a teacher, so you all need to know how to prepare the institutional plan and what is your role. Though we have discussed, though we have given the name of the unit in such a way that the role of the school heads, it means the headmaster, but not means that only headmaster. Every teacher is a school head because they have to prepare institutional planning for their classroom part. So what is their role as a teacher? So how a teacher should act to prepare the institutional plan, what they should do actually, what are the steps, the necessary steps a teacher should take to prepare the institutional planning. So in the first part of this unit we are going to discuss the steps actually, what are the steps required for effective institutional planning. So we all know that effective institutional planning is very crucial for achieving educational goals, maintaining high standards, and ensuring the success of an educational institution. So for maintaining or ensuring the success of educational institution, what are the steps a teacher should take for make the institutional planning an effective one? So first and the foremost is what? To establish a planning committee. So we all know to make a plan we need some members. Alone a teacher cannot make a plan. So the first and the foremost role of a head teacher or any teacher who will formulate a plan, who will make a plan, is to plan a committee. That means who will be in the committee? The first and the foremost thing is to establish a planning committee, and it will include administrators, faculty, students, parents, and community representatives. And this diverse group actually they will provide valuable insights for planning the institutional plan. The second most important step is assess current state. Suppose you are a teacher, you are the head teacher, and you are going to prepare the institutional plan. At present, what is the important focus of every teacher? To make our education system align with NEP 2020, the new educational policy. If we make the institutional plan which cannot adapt with the new educational policy, that means what? We will not achieve success. Hence, we should see the current state. What is the current state of our education system, and accordingly we should prepare the plan. So the second step is what? Is to conduct a comprehensive assessment of the current state of the institution. It will include analyzing the academic performances, it will include analyzing the resources, it will include analyzing the infrastructure, it will include analyzing the faculty qualification, student demographics, and the overall environment. So this is the second step, that is assess current state. The first is to form a committee, to plan a committee, and next is to assess current state. The third is to define vision and mission. This step clearly defines the institution's mission and vision
and this should articulate the purpose, values and long-term goals of any educational institution. So the third purpose is define vision and mission. The fourth step is to set objective and goal. See, we all know every educational institution should have their own objective, should have their own goals. Because without objective, without goals, an educational institution cannot succeed. So, the fourth step is to set objectives and goals, and this step is to establish specific, measurable, achievable, relevant and time-bound objectives and goals, and this should align with the institution's mission and vision and cover areas like academic excellence, infrastructural development, student development and community engagement. Next is the SWOT analysis. The fifth step is the SWOT analysis. What is SWOT analysis? It's the term SWOT is very common for us. What are the things that is included in SWOT? That is strengths, weakness, opportunity and threats. So this four things include the SWOT analysis: strengths, weakness, opportunities and threats. So the next step for making effective institutional planning, every institution should do SWOT analysis. Why? Because it will help to identify internal and external factors that impact the institution's ability to achieve its goal. If every institution will come to know their strength, come to know their weakness and comes to know their opportunities and threats, then they can make way through the institutional planning, they can make way to get the strengths, to remove the weakness, to get the opportunities and to remove the threats. So this will help to build an effective educational institution to a greater height. It will bring any institution to a greater height. So it is the duty, most important duty of every teacher to make SWOT analysis not only for the institution but also for your classroom transaction. Because if you know the strength, weakness, opportunities and threats of your students, it will help to bring the academic excellence among your students in your classroom. So you must follow as a teacher for effective, not only for the institutional planning but also for the classroom planning. This is the very much important step for every teacher, and this is the role of every teacher to perform for a effective institutional planning. Next is the environmental scan. So institutional planning is to continuously monitor the educational landscape, trends and emerging technologies to adapt the institution strategies accordingly. Next is to allocate resources. Another step is to determine the necessary financial, human and technological resources. So every institution, one of the effective steps for institutional planning is to allocate resources. That means how much resources they will provide for human development, for technological development, for material resources. So that should be in a very proper plan, in a strategic way. A strategy budget should be prepared by a head teacher or by the head of the institution. So in which sector how much resources will be allocated, that should be implemented or that should be pre-planned with the help of the institutional planning. Next, to develop action plans. Now, to create detailed action plans that outline how each objectives will be achieved is another important steps for effective planning. So these plans should include timeliness, responsible parties and key performance indicators to track the progress. The next step is the curriculum design and review. We all know curriculum is an integrated part of every institution. So to design a very updated curriculum and to review what are the lacunas, what are the nook falls is there in the curriculum
is the important role to be performed by a teacher in preparing the institutional planning. So what the teacher should do, they should help, or the head teacher should do, they should help in preparing proper curriculum designing, and also the reviewing the needs to meet the changing needs of the students and the job market. Next is the faculty development. To invest in professional development of faculty members, ensure that they stay current with the latest teaching methodologies, and subject matter expertise is an important step for effective institutional planning. Next step is to student support services. So to implement and enhance student support services such as counseling, mentoring, tutoring, it helps students to succeed academically and personally, is an important step to be followed by every teachers, head teachers, or the role of one of the important role of the teachers for making an effective institutional plan. Next is the community engagement. So for effective institutional planning, it is to establish partnership with the local community, business, and other educational institutions to enrich the learning experiences. It provides internships and students support for transition to the workforce. So why community engagement is important, and how the teachers is an important part to make the people of the community engage, is an important step for effective institutional planning. Next is to check the quality assurance and assessment. Yes, one of the important aspects of institutional planning, that means the role to be played by a teacher in institutional planning, is to develop a robust system for assessing and ensuring the quality of the education to be provided. Next is the communication and feedback. So the teacher, who is the important factor of the every educational institution, should open a line of communication so that all the stakeholders, including students, parents, faculty, and other the community people, they can give their feedback for improvement of the institution, and that communication line should be made by the teachers, because, or the head teachers, or the head of the institution, because if they give the scope to improve or to speak, to give the feedback, then only the institution will improve. Next is mentoring and evaluation. So another essential step is to continuously monitor the progress of the action plan, because we prepare institutional planning is what? It's an action plan. What we will do for a year, or what we will do for a 2 year, or what we will do for the 5 years. So it's an action plan. So it is very much important for a teacher or the head of the institution to monitor and evaluate that whether the action plan is in progress, or whether they have assessed the outcomes which is required for the development of the institution. So that should be checked by every teachers or every head of the institutions. Next is the documentation and reporting. So to keep comprehensive records of planning, implementation, and the outcomes is an important aspect of every teacher. So documentation and reporting is very much important, and it is an important step for effective institutional planning. Next is the adaptability. So institutional planning is to be prepared to adapt the institutional plan as circumstances changes. That means it should be flexible in such a way, if time requires, or if when the need arises, then the institutional plan can be changed as per the need of the society, or as per the need of the hour. Next is the crisis preparedness. So develop contingency plans for the crisis period is an important need of a institutional planning. So if we need to make an effective institutional planning, every head of the institution should prepare for crisis period, because we all know, or every time we cannot have
a good period. Sometime there will be we have the crisis. So that crisis can be, that unforeseen crisis can be natural disaster, financial challenges, health emergencies. So every institutional plan should develop in such a way that they can meet with that crisis whenever necessary. So these are the effective steps should be taken, which steps should be taken by the teachers to make the institutional planning an effective one. And hence we can say that educational or to make effective institutional planning in education, it is always an ongoing process. It goes on changing with the need of the hour, that requires commitment, that requires collaboration, and also forward-thinking approaches. And it should be driven by a commitment to the continuous improvement and the overreaching goal of providing a high-quality educational experiences for all students. So, here in gist, we can say that these are the these are the points for the effective steps for institutional planning. So what are the steps? First is to establish a planning committee, then to assess current state, then to define vision and mission, then to set objectives and goals, then make the SWOT analysis, then to make the environmental scan, then allocate resources when needed, develop action plans, prepare or to design curriculum, and to make review for further development, for giving scope for faculty development. Then the student support services whenever needed should be provided by the institution, and community engagement must be checked by every teacher, head of the institutions, to make the institution a developed one, a successful one. And next is to check the quality assurance and assessment, and have the communication, have the scope of communication and feedback, then to monitor and to evaluate the action plan which was prepared for the long term or for the short term period, then for and to keep proper documentation and to report whenever needed to the stakeholders. Next is to have the scope for adaptability, and last but not the least is to prepare every institutional plan for the period of crisis, because crisis management is also an important role to be played by every head of the institution to have a developed institutional planning. At the end of this 2 unit, you can go through this video which will help or which will motivate you to know something more about the institutional planning. Thank you. Hello everyone, I welcome you all, and the topic which I am going to discuss today is institutional planning. What is institutional planning? संस्थागत नियोजन क्या है? हमने शैक्षिक नियोजन पढ़ लिया है, और जब हमने शैक्षिक नियोजन पढ़ा था तो उसमें हमने जाना था कि उसका एक टाइप है संस्थागत नियोजन. तो प्लानिंग इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ ए प्रोग्राम इन इंस्टीट्यूशन. ऑब्वियस है कि हमको कोई इंस्टीट्यूशन चलाना है, उसकी स्मूथ रनिंग करनी है, तो हमको उसमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम उसमें क्या प्रोग्राम्स चाहते हैं. ईच ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन अंडरस्टैंडिंग एंड आइडिया for implementing the programs and functions for achieving the organizational goal. हर इंस्टीट्यूशन, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है, और उसके लिए, उस गोल्स की प्राप्ति के लिए हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है जब एक्शन प्लान, उसके लिए हम एक प्लानिंग करते हैं. इट इज ए प्रोग्राम फॉर डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग द एक्टिविटीज ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इंस्टीट्यूशन. यानी कि किसी भी शैक्षिक संस्था में हमको बहुत सारी क्रियाएं करानी पड़ती हैं, तो उनके विकास के लिए, उनको सुधार करने के लिए संस्था के द्वारा बनाई गई जो योजना है वो संस्थागत नियोजन कहलाती है. और इस किस पर बेस होगी? ऑन द बेसिस ऑफ द लर्नर्स नीड्स, यानी कि जो उसमें पढ़ने वाले हैं, जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, उनकी आवश्यकताओं पर आधारित होंगे वो गोल्स, और रिसोर्सेज एंड द रिसोर्सेज अवेलेबल इन इट्स प्रीमाइसेस, और उस इंस्टीट्यूशन में जितना भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उस पर बेस करेगा, उस पर आधारित होगा. Thus,
द इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग इज ए कोर्स ऑफ एक्शन, ये एक तरीके का एक्शन प्लान है प्रिपेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उस संस्था के सदस्य जो हैं वही उसको बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं? फॉर प्रमोटिंग द इंस्टीट्यूशनल सेटअप, जिससे कि हम उस संस्था के इंस्टीट्यूशनल सेटअप को बेहतर कर सकें, उसमें सुधार कर सकें। ओके, फिर हम इसको एक अच्छी डेफिनेशन, एक अच्छी कोट से कोट कर सकते हैं, एक अच्छी सेइंग से। एमबी बुद्ध साहब का कथन है, 1968 में इन्होंने कहा था, 1968 में, देखिए कितनी पुरानी बात है। सॉरी, एन इंस्टीट्यूशनल प्लान इज ए प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के लिए किया गई एक योजना है, एक कार्य है, बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसको कि एक शैक्षिक संस्था बनाती है। ऑन द बेसिस ऑफ, किस पर आधारित होती है ये एक्शन प्लान हमारा? फेल्ट नीड्स, जो उस संस्था ने आवश्यकताएं महसूस की होती हैं उस पर, एंड द रिसोर्स अवेलेबल और लाइकली टू बी अवेलेबल, और किस पर बेस्ड होता है? जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उस पर, या उपलब्ध हो सकता है भविष्य में उस पर, विद अ व्यू, और हमारे लक्ष्य में कौन सा दृष्टि रहती है कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं स्कूल के प्रोग्राम को, स्कूल की प्रैक्टिसेस को। देखिए कहीं कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मिलेगा, कहीं स्कूल मिलेगा लिखा हुआ, तो वो दोनों एक ही मतलब है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द स्कूल एंड द कम्युनिटी। यानी कि प्लानिंग में हम स्कूल के रिसोर्सेज को तो लेंगे, कम्युनिटी का भी पार्टिसिपेशन ले लेंगे, और इसीलिए हर इंस्टीट्यूशन को अपनी फेल्ट नीड्स के हिसाब से, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से प्लानिंग करनी होगी, जिससे कि वो गोल्स को अचीव कर सके। ओके, सो दिस इज इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। और क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इट्स 5th 5-year प्लान गेव स्पेशल अटेंशन टू इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने अपने 5वीं पंचवर्षीय योजना जब बना रही थी, तो उसमें संस्थागत नियोजन को विशेष महत्व दिया गया। इट बेसिकली इंडिकेट्स 2 थिंग्स, इसके अंतर्गत 2 तरीके की प्लानिंग आती है। कौन कौन सी? इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, यानी इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग में 2 प्लानिंग आएंगी। एक तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, और किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया जाए, यानी कि क्लासरूम के अंदर कैसे टीचिंग लर्निंग चलेगी, और क्लासरूम को इटसेल्फ हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये 2 तरीके की प्लानिंग मिलकर इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग बनते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग है क्या? इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजिंग और मैनेजिंग द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द इंस्टीट्यूशन, है ना, जो मटेरियल रिसोर्सेज है, क्लासरूम, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका जो भी है, उसको हम कैसे बेहतर बनाएंगे। और इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग में क्या आएगा? इट इज एसोसिएटेड विद द प्लानिंग ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द बिहेवियरल पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी कि मटेरियल पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन को हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के तहत प्लान करेंगे कि कैसे बेहतर बनाना है, और मटेरियल के अलावा जो कुछ भी और पार्ट्स हैं, वो सब कुछ इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग में आ जाएगा, यानी कि उसका बिहेवियरल पार्ट बन जाएगा। सच एज मटेरियल रिसोर्स निकल गया, तो बचा क्या? ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड देयर यूटिलाइजेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारा, उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये हम इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग में तय करेंगे। और हमको बनाना क्यों है? कि हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकें, जिससे हमको जो प्रोग्राम है उसको बढ़िया से बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें, उसको लागू कर सकें। इट इज सिस्टमैटिक प्रोसेस, ये एक मतलब सिस्टमैटिक है, हैपहैज़र्ड नहीं है, हम एक क्रमबद्ध चलेंगे। क्रमबद्ध प्रक्रिया है, किसकी प्रक्रिया? ऑफ अप्लाइंग, यानी हमें अप्लाई करना है, लागू करना है, क्या करना है? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, यानी कि वैज्ञानिक सिद्धांतों को, टू दी प्लानिंग, यानी कि नियोजन हमें ऐसे नहीं हैपहैज़र्ड आज इधर चले आज उधर चले, नहीं, क्रमबद्ध होगा, सिस्टमैटिक होगा, साइंटिफिक होगा। तो प्लान करेंगे, डिजाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कि पहले हमने योजना बनाई, फिर हमने नमूना बनाया, फिर हमने उसको निर्माण कर लिया, फिर हमने उसको लागू कर दिया, और उसके बाद हमने क्या किया? इवेल्युएशन किया, यानी कि मूल्यांकन किया उसका, फिर ऑफ एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इंस्ट्रक्शन, यानी कि तब हम एक प्रभावी, एक प्रभावोत्पादक अनुदेशन दे पाएंगे। किसके लिए? फॉर अचीविंग द पर्पस और गोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ताकि हम गोल, यानी कि जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के तहत आपकी संस्था का निर्माण किया गया है, उसको हम प्राप्त कर सकें। ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के 2 हिस्से हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में मटेरियल रिसोर्सेज की बात की जाएगी, और अदर देन मटेरियल रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज, बिहेवियरल पार्ट, इसकी बात इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग में की जाएगी।
ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है संस्थागत नियोजन का? सबसे पहले एन एफर्ट टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज अवेलेबल इन इंस्टीट्यूशन, यानी ऐसा ना हो कि आपके इंस्टीट्यूशन के पास रिसोर्स है तो पर हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, यानी कि एक प्रयास हो जिससे संस्था के सभी जो प्राप्य संसाधन है उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। टू इनरिच द इंस्ट्रक्शन इन द इंस्टीट्यूशन का निर्माण क्यों किया गया है? ताकि हम उसमें बढ़िया से बढ़िया आपको शिक्षण प्रदान कर सकें, तो बढ़िया इंस्ट्रक्शन हम कर सकें अपना, इसके लिए। देन to deliver the opportunity and freedom to teachers to take suitable course of action in order to bring about effectiveness of the institution, यानी कि हम opportunity अवसर प्रदान करें, इतनी स्वतंत्रता दें शिक्षकों को कि जो भी कोर्स वो पढ़ा रहे हैं उसमें वो बढ़िया इफेक्टिवनेस कैसे ला सकें, कैसे इंस्ट्रक्शन अपना बढ़िया बना सके, इसके लिए इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग की जाती है। टू एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन एंड नेशनल लेवल प्लानिंग। हमने बात की थी कि जो नेशनल लेवल प्लानिंग है वो तो एक प्लानिंग हो गई, लेकिन इतना बड़ा देश है, इतने संसाधन है, इतनी विविधता है, तो हर इंस्टीट्यूशन को अपनी फेल्ट नीड्स के हिसाब से, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से अपनी इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग करनी होगी। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है वो एक सेतु का काम करती है, एक बांध का काम करती है, एक पाटती है रास्ता किसके किसके बीच में, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो डेवलप करे इन द लाइन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। ओके, then to make provision for utilization of adequate available manpower of the institution, यानी कि आपके इंस्टीट्यूशन में जितना भी मैन पावर उपलब्ध है उसको हम बढ़िया से बढ़िया यूटिलाइज कर सकें। to provide an opportunity to the local community, school staff, students and teachers to join hands in improving the institution, यानी कि सब एकदम कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो, जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो सब हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर ऐसा अवसर प्रदान किया जाए कि संस्था के उत्थान के लिए काम करें। फिर to provide realistic and concrete ideas to institutional planning, और जब felt needs के हिसाब से प्लानिंग होगी तो वो रियलिस्टिक होगी। तो ये और बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं जिनके तहत संस्थागत नियोजन किया जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या इसकी खास बात है, क्या विशेषता है संस्थागत नियोजन की? सबसे पहली विशेषता, ये नीड बेस्ड है, आवश्यकता पर आधारित है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हमारा संसाधन क्या है, हमारे रिसोर्सेज क्या है, हमको कहां तक जाना है, तो किस बढ़िया से बढ़िया रास्ते से जा सकते हैं, यही इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है। देन स्पेसिफिसिटी, ये स्पेसिफिक है, हमारा जो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है वो आपकी इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग नहीं हो सकती, बिकॉज बोथ इंस्टीट्यूशंस आर डिफरेंट, बोथ द रिसोर्सेज आर डिफरेंट, स्टेक होल्डर्स आर डिफरेंट, देयर नीड्स आर डिफरेंट, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द लर्नर्स आर डिफरेंट। ओके, देन यूटिलाइजिंग ह्यूमन एफर्ट्स, यानी कि जितना भी मैन पावर है, जितना ह्यूमन रिसोर्स है उसको हमको यूटिलाइज करना है। गोल ओरिएंटेड है, हम लक्ष्य आधारित है, लक्ष्योन्मुख है, लक्ष्य की तरफ काम कर रहे हैं, वैसे ही कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। कोऑपरेटिव, कहा ही जा रहा है कि स्कूल स्टाफ कम्युनिटी एवरीबडी का पार्टिसिपेशन हमको सीख करना है, सो दैट वी कैन इम्प्रूव, वी कैन इम्प्रूव द इंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। एंड फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम आवश्यकता के हिसाब से लचीलापन रखेंगे, इतना रिजिड नहीं होंगे कि बिल्कुल ये नहीं करना है, ये करना है। कह रहा है ना कि अवेलेबल रिसोर्सेज और या जो लाइकली टू बी अवेलेबल इन फ्यूचर, तो इसलिए हम फ्लेक्सिबल भी होंगे। तो इतनी तरीके की खास बातें, विशेषताएं संस्थागत नियोजन की कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं, बन जाती हैं। देन स्टेप्स, कैसे चलें, कौन कौन सा चरण है, पहला क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमको करना है विश्लेषण, एनालिसिस करनी है, एकदम बढ़िया सटीक एनालिसिस हमको करनी है कि क्या हमारा इंस्टीट्यूशन है, कहां तक हमको जाना है, क्या क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं, कितना मैन पावर है, कितना ह्यूमन एफर्ट हम लगा सकते हैं इसमें, मटेरियल रिसोर्सेज की क्या स्थिति है। फिर सर्वे ऑफ द नीड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, हमारे संस्था की क्या आवश्यकताएं हैं, इसका सर्वे किया जाए। फिर हमारे पास कितना संसाधन है, इसका सर्वे करें। उसके बाद क्या करें, डिटरमाइनिंग प्रायोरिटीज एंड फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन प्लान। फिर हमको सुनिश्चित करना होगा कि सबसे पहले क्या सुधारना है, सब चीजें एक साथ नहीं सुधारी जा सकती, वन बाय वन चलेंगे। तो पहले प्रायोरिटी सुनिश्चित करेंगे कि सबसे ज्यादा जरूरत में मरम्मत किस चीज की है, किस चीज की मरम्मत करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो उसको सुनिश्चित करेंगे, उसके हिसाब से एक्शन प्लान बनाएंगे। देन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, उस प्लान को एग्जीक्यूट कर देंगे, जो योजना हमने बनाई है उसको लागू कर देंगे, और उसके बाद लागू करने के बाद देखेंगे, उसका फॉलोअप करेंगे कि हम कितने सफल हुए, कहाँ कोई कमी रह गई, लूप होल रह गया, कोई दिक्कत आई, उसको फिर सुधारेंगे। तो इस तरह से इवेल्युएशन करेंगे। इस तरह से इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग चलती है। पहले एनालिसिस करना है, फिर नीड्स का, रिसोर्सेज का सर्वे करना है, फिर प्रायोरिटीज सेट करनी है, फिर प्लान बनाना है, एग्जीक्यूट करना है, एंड देन उसका इवेल्युएशन करना है। ओके, स्कोप क्या है?
क्षेत्र क्या है संस्थागत नियोजन का, करेंगे तो क्या क्या फायदा है, कहाँ कहाँ सुधार हो सकता है, किसमें सुधार हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल कैंपस, एकेडमिक फैसिलिटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज और स्कूल प्रोजेक्ट्स। मतलब आपका जो संस्था है उसका जो कैंपस है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार हो जाएगा, हम इस तरह से योजना बनाएं। फिर एकेडमिक फैसिलिटीज, यानी कि देखो इंस्टीट्यूशनल कैंपस किससे जुड़ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर से, एकेडमिक फैसिलिटीज किससे जुड़ गई, इंस्ट्रक्शनल से, तो ये दोनों तो सुधर ही जाएंगे अगर हम उस दिशा में काम करेंगे तो। को करिकुलर एक्टिविटीज भी, क्योंकि आजकल क्या बहुत समय पहले से सिर्फ करिकुलम से काम नहीं चलेगा, को करिकुलर भी चलता है ताकि हम ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड कर सकें, तो को करिकुलर एक्टिविटीज में भी सुधार आएगा। एंड स्कूल प्रोजेक्ट्स में, कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो आपके, हमने कहा था ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लिखें या स्कूल लिखें, दोनों का एक ही अर्थ में प्रयोग किए जा रहे हैं। तो इतनी चीजों में सुधार आ जाएगा अगर हम बढ़िया इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग करेंगे तो। देन बेनिफिट्स, क्या लाभ है इसके, बिल्कुल लाभ है। क्या लाभ है, इट इज मोर रियलिस्टिक। ये क्यों रियलिस्टिक है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स। हमने स्टेक होल्डर से पूछा है, स्टाफ से बात की है, टीचर से बात की है, स्टूडेंट से बात की है, पेरेंट्स से बात की है, जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनसे बात की है, तब हमने बनाया है कि इसकी क्या नीड्स हैं, क्या गोल है, कहां तक हमको जाना है, इसलिए रियलिस्टिक होता है। देन इट अवॉइड्स वेस्टेज, इसीलिए इसमें नुकसान नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हम किस पर काम कर रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन नॉलेज अबाउट रियल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द कम्युनिटी। जो कि समुदाय है, जो भी सोसाइटी जिसमें वो स्कूल इंस्टीट्यूशन आपका स्थित है और जो उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उन्होंने ही तो डेटा प्रोवाइड किया, उसी हिसाब से हमने एक्शन प्लान बनाया, इसलिए वेस्टेज कम होता है और रियलिस्टिक होता है, इसलिए ज्यादा प्रभावी होता है। और इन्वॉल्विंग टीचर्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ओह ये प्लानिंग कहाँ, ये PL आएगा यहाँ पे। Planning motivates them and channelizing their energies towards achieving the goal। जब हम किसी चीज में, योजना में हम खुद शामिल हैं तो हम खुद चाहते हैं कि वो योजना सफल हो। तो जब शिक्षक योजना में शामिल होंगे तो वो चाहेंगे योजना फलीभूत हो, इसलिए उनकी एनर्जी जो होती है वो भी चैनलाइज होती है राइट डायरेक्शन में, और वो चाहते हैं, वो उस दिशा में काम करते हैं कि जो योजना है वो अपने एंड को प्राप्त कर सके। इसलिए इसके बहुत लाभ है, बहुत सारे हैं, मैंने कुछ ही लिखे हैं यहाँ। और अब कंक्लूजन, कैसे हम निष्कर्ष निकालें संस्थागत नियोजन पर। द इंडियन एजुकेशन कमीशन, जो आपका भारतीय शिक्षा कमीशन आयोग आया था, जिसको कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग भी कहते हैं, 1964 में आया था, 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। ये क्या कहता है, दैट एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन डू अ ग्रेट डील through better planning and hard work to improve the quality of education within its existing resources। यानी कि कोई भी शैक्षिक संस्था बहुत अच्छा कर सकती है अगर वो बेहतर योजना बनाए और कठिन परिश्रम करे उस दिशा में जिससे कि शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सके, उसके जितने रिसोर्स हैं उसमें होते हुए भी। Then Dr. V.K.R.B. Rao कहते हैं, had also emphasized the importance of institutional planning for qualitative improvement of the school. He remarked, each institution will have to learn to plan its development on its own individual lines within the broad framework of national policy on education। यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपके देश में बनी हुई है, अभी तो नई 2020 में आ गई है, तो उसकी लाइन में, यानी उसी दिशा में, उसी की कंफॉर्मिटी में कैसे हम अपने इंस्टीट्यूशन में ऐसी प्लानिंग करें कि हम उन बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएं। क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन के लिए प्लानिंग नहीं की जा सकती, हमको एक ब्रॉड फ्रेमवर्क दे दिया गया और हर इंस्टीट्यूशन को अपने हिसाब से, अपनी रिसोर्सेज के हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से, अपने स्टेक होल्डर्स के हिसाब से उस ब्रॉड फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूशन की प्लानिंग करनी है। और अगर ऐसा करेंगे तो बेहतर है, बेहतर हम चीजें अचीव कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, शिक्षण व्यवस्था सुधार सकते हैं, बढ़िया स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशन से।